Dear student, I hope you are doing very well at home during current time. Today I am going to deliver first lecture about the lesson number 1, Hazrat Umar bin Abdul Aziz रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम के 4 खलीफे हैं। सबसे पहले खलीफे का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सेकंड हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, थर्ड हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फोर्थ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने ये नाम इसीलिए बताया कि क्योंकि इस्लाम के 4 खलीफे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम का वैसे तो 4 ही होते हैं, मगर कोई पूछे कि 5वां खलीफा किसको कहते हैं, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी हुकूमत जो थी वो 4 खलीफों ने जैसे चलाई थी वैसे ही चलाई थी, उसी उसूलों पे। जो 4 खलीफों की हुकूमत थी, उस 4 खलीफों ने जो हुकूमत की थी उन दौर को खुलफाए राशिदीन कहते हैं। प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 2. It happened really that a man honorable with the power of crown and he refused to have it the selection of Hazrat Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu as a caliph and on hire to his Umayyad dynasty in an illustration of such rare happenings. King Sulaiman bin Abdul Malik was taking his last breath when he relieved his will and declared Umar bin Abdul Aziz immediately successor. He commanded the royalty to endorse his decisions as a king directed. All the members of the royal family willingly or unwillingly moved forward and assured Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu of their support. Then the decision was also endorsed by the general public. However, Hazrat Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu could not accept it. He called the people and addressed to huge congregations to make them realize the significance of their decisions. In the same meeting, he showed his indifference to the throne and asked the people to choosing a better person as a caliph. However, the people could not be convinced to go against the will of the late King Sulaiman, and they showed their support to Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu publicly. This paragraph में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो था आप जानते हैं, जैसे कि आपने अगर एक इज़्ज़त वाला जो ताज पहनने की ताकत रखता हो और उन्होंने उनसे पहनने से इनकार कर दिया, जैसे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो था उनको सिलेक्ट किया गया था जैसे एक खलीफे के तौर पे, और जैसे कि वो वारिस था उमैयाद डायनेस्टी का, और उसने एक तस्वीर या एक अच्छा सा वो चला सकता था हुकूमत। किंग सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो था, उन्होंने उनकी आखिरी सांसें थी जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को इसका मेरे बाद जो है इसको किंग बनाया जाएगा, वही वारिस होगा, वो हुकूमत चलाएगा। और उन्होंने जो है हुक्म दे दिया कि अपने जो उनसे शानदार जो अपनी शाही तख्त थे उनको अपना फ़ैसला सुना दिया। और उसके बाद जैसे कि किंग जो है उन्होंने ये जो है सारे मेंबर को जो शाही ख़ानदान के थे, जो खुश हों या ना खुश हों, उन्होंने अपना फ़ैसला बता दिया कि सब जो है उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को सपोर्ट किया। और उन्होंने जो फ़ैसला किया तो फिर उन्होंने हुकूमत जो अवाम थी उनसे पूछा, जैसे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो थे उन्होंने कबूल नहीं किया कि मैं किंग बनूं। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बड़ा सा जो है इजलास बुलाया और वहाँ उनको खिताब किया कि अब उन्होंने महसूस किया कि जो अवाम चाहती थी, अवाम कह रही थी कि जो किंग ने फ़ैसला किया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को
ملک کا میرے بعد کنگ بنایا جائے، تو پھر پبلک نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ اس سے بہتر خلیفہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی جو مرحوم کنگ سلیمان تھے ان کی بات پہ راضی ہو گئے، ان کے مخالف نہیں ہوئے۔ تو اسی لیے سب نے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عوام نے بھی سپورٹ کیا۔ As soon as he finished the funerals and burial rites of the late king, the promising son of Hazrat Umar bin Abdul Aziz asked his father to return the property confiscated by Umayyad to their rightful owners. He was so much overwhelmed with a sense of responsibility that as soon as took charge of the caliphate, he started his restorations of lands to their original and rightful owners. He started his process of land reforms from his own home and returned to their original owners the land which were under his family's control. In this way, Hazrat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu revived the spirit of the glorious period of the four caliphs of Islam, known as Khulafai Rashidin, particularly of Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. From the first day his rule, the people of that time experienced that the ruler of the nation was in fact a servant of the nations. جیسے جیسے بادشاہ سلیمان مرحوم کی جو تھی ریتی رسمیں یا اس کو دفنانے کی جتنی بھی رسمیں تھی جنازے کی ختم ہونے کے بعد جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے فادر سے اپنے باپ سے پوچھا کہ جو بھی یہ سرکار نے ان کی پراپرٹی ملکتیں جو امیاد کی جو ہے ضبط کی ہوئی ہے جس کے وہ خود حقدار ہیں، یہ میں ان کو ریٹرن واپس کر دوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ اپنی ذمہ داری سنبھالی اور جو ہیں انہوں نے جو اس کے جو مالک تھے زمینوں کے ان کو واپس کر دیا اور ان فیملیوں پہ ضابطہ منع قابو میں لائے۔ اور حقیقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھا وہ بالکل شاندار جو دور تھا 4 خلیفوں کا اسلام میں جس کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی ویسے ہی اصول بنائے اپنے حکومت میں اور لوگوں کو اس وقت کی جو ایکسپیرنس تھا انہوں نے ویسے ہی اپنی قوم کے ساتھ حکومت کی۔ حقیقت میں ایسے کہ جیسے کہ وہ اپنی قوم میں ہر کس کو ایکول دیکھنا چاہتا تھا چاہے وہ سروینٹ ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حکومت چلائی تھی۔ اوکے، ٹمارو ول بی کنٹینیو۔